Let's do this together. Let's build, let's play, let's win this together. I want to ask you one question, and I hope I get a resounding I am game when I ask this. Ladies and gentlemen, are you game? I can't hear I am game clearly and loudly. Are you game? Wonderful, I love that. So ladies and gentlemen, with a big round of applause, welcome to the second momentous edition of I Am Game 2025. So good to be here. I think you can see that I'm amongst the most excited. Looking forward to a great day. But of course, ladies and gentlemen, the auspicious light truly illuminating our path ahead. Where there is light, there is no space for darkness. Where there is knowledge, there is wisdom. There really is. And that is exactly what this platform is all about. IAMGAME is more than just a conclave. It's a movement, a national stage where players, policymakers, coaches, creators, brands, dreamers come together, reimagine the future of Indian sports. Whether you are an Olympian or an aspiring athlete, a fan in the stands or a policymaker in the system, you are a vital part of this ecosystem. And in the spirit of that unity, this conclave brings everyone under one roof to exchange ideas, to share journeys, to spark collaborations, and most importantly, to inspire the next generation of champions. Over the course of the day, you will hear from icons who have broken records and barriers. You will witness conversations that challenge convention and ignite imagination, from grassroots development to global podiums. From technology and training to the business of sport, every panel, every voice today contributes to one vision, making India a global sporting powerhouse. I'd like to take a moment to thank all our speakers, partners and delegates for being part of this incredible journey. Your presence here today sends a strong message that India is not just watching the game, India is in the game. My only one request for the day is positive affirmations for the sports fraternity today. And instead of saying yes, we'll all say I am game. So whether you come here as a learner, a leader, a creator, or a champion, we invite you to be present, be curious, and above all, be game. Once again, a heartfelt welcome to IAMGAME. Let's make today unforgettable and create memories and businesses together. Thank you. Would like to hand over the mantle to my partner Karan Chetri, who has worked tirelessly to create the next 2 days for you with a lot of passion and love. Please put your hands together and welcome my partner and buddy, Karan Chetri. Thank you all for having me today. It's indeed a pleasure for me to be here amongst people I love spending the most time with, which is people from the sports background, from the industry, in various facets. So thank you very much for having me here. I have to say, when I was first told about this whole organization and this vision, I was at Anuj's store. And in fact, I was kind of making this shirt and this suit right there. And at that point, I wasn't invited to this event. But when he saw me put this suit on, he said, "Oh, this is the guy I want to go." So thank you very much, Anuj, for telling me about the event, the mission, the goal, and having me here today. It's very nice to also see people from the MP League family here. Always love interacting with them, and each time we meet, we come up with
new ideas on how to take cricket forward in Madhya Pradesh and for India. So lovely meeting you all here again. I have to say that when I was first introduced to this platform, I was excited because it spoke a language that was something different, something that I aligned with, which is about how to get sports education and curriculum back into the school and make it more powerful, make it more exciting. And with that, I also feel that understand people struggle very hard to get to the top of the leagues, to top of the competition. And many times, while doing so, they face a lot of hardships. And they face hardships because the family sometimes doesn't believe in them. They don't believe in themselves because, again, of that scarcity of opportunity. And midway somewhere, some people don't make it. And in their mind, they then think, what do I do? Because a lot of the time I've sacrificed my education, I've sacrificed another opportunity to pursue this career. So while it's very important to inculcate the importance of education in schools, both primary and secondary, it's very important, I feel, also to connect the whole job ecosystem to it. And that's kind of what we've focused on with Madhya Pradesh Premier League as well. While we create the infrastructure, while we create the platform, for people to showcase their talent, we also have made sure that the franchise owners that connect with us are aligned with the vision to also promote sportsmen and give them job security. So we have ensured that each franchise owner gives 2 jobs to men and 2 jobs to women from the cricket background and MP. So that has really pushed kind of a new spirit in people because although it's not much in total, it's 4 into 7 teams. Right, it's a light, it's a hope that if it's starting here, it may start somewhere else. Maybe other sports may also start, and this may also grow to give me. We must also create brand value in terms of building infrastructure in that area. So create coaching systems where you can not only give ex-cricketers jobs in something that they really love doing, which is playing the sport and teaching other people how to play the sport better, but also building for the future. Building sports education in that particular area for the future, whether it's in terms of nutrition, whether it's in terms of the physical exercise and what exercises to do, and now very important is also how to recoup and recover and work on your physiotherapy as well. So it's a combined action plan that really makes the person very well aware of the full 360 degree of being a sportsman. So that's the kind of initiative that we're kind of pushing forward in Madhya Pradesh, and I hope with everyone here, depending on what their passion is in sport, that you too, as a community, come together and work on an initiative within a sport that you find most interesting, that not only looks at education but also connects education with the end result. Of providing the opportunity, and if not providing the opportunity, a fail-safe for that individual in that sport. Now, along with that, I was speaking to Anush today, and I really loved the idea that you guys have come up with for the future of this platform, which is almost creating an online community of people from various backgrounds. I think that's something that's really missing today. Even today when I was building my league, I was finding it very difficult to connect with like-minded people, right? After many attempts, I found the right people to build this league with. But I feel like it's very important to have a community such as a LinkedIn for sports, for people from the business background, for people from the sporting background, from people just who want to be a part of the ecosystem because they're fans of the sport, and to people who want to sponsor the sport.
I think it's really, really important that that ecosystem comes into existence, and that will really help in promoting a team building exercise. Because from what I've learned in sport, although there are many sports that are individual, a country that truly needs the support and the education in the area, and I'm looking forward to kind of meeting a lot of people here and working with them in some capacity or the other in the future. So thank you very much for having me, and best of luck to everyone. That makes it a lovely picture. Good afternoon, everyone. My name is Karan Singh Chetri, and I have a very special person next to me, Mahan Aryaman Rao Sindhya. And I don't need to give any introduction, you already know who he is. And on my right, I have Anuj Madan, who's also a partner to IAMGAME. And I have a co-founder with me, Mr. Mandeep Malhotra. And I have Poonam Lal, who is also a co-founder with me on IAMGAME platform. And first of all, I want to say thank you, Aryaman, for being here for the press conference, because our focus has always been to address grassroots, right? That's how IAMGAME was born. And when we realized that when you have to focus on grassroots, if you focus only on grassroots, you will not be able to bring things faster as what we want to do for the country. So therefore, we said, how do we address that? And we went on to create a platform where thought leaders come, and how we address those thought leaders and the business of sports around it. Because till the time you don't bring that business of sports, you'll not be able to get that economy and reach out to the right people. So we need to do that, so that the direction is right, so that हमारे 80% हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी हैं वो टियर 2, टियर 3 से आते हैं, आपको पता है। एंड कई कई जगह पे आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे कोचेस जो हैं वो अपने बलबूते पे खड़े होकर काम करते हैं। तो भाई, हमारा देश इतना बड़ा है, इतना आगे निकल गया है, तो हम किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? सो ऐसे ही प्लेटफॉर्म से हम चाहते हैं जितने भी कोचेस और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जिनको हम जितना हेल्प कर सकें थ्रू दीज प्लेटफॉर्म, सो दैट दे आर रिकग्नाइज्ड, एंड एट द सेम टाइम एक इकोसिस्टम बनता रहे। ये टाइम लगेगा, बट वंस इट गेट्स रोलिंग, इमेजिन व्हाट विल हैपन। एजुकेशन सिस्टम विल नो व्हाट दे हैव टू डू, coaches will get coached by better technologies and better ways of things, sports science will flourish, people will understand what sports science is, right? बच्चे जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं था, उनके पास अब एक्सेसिबिलिटी होगा, क्योंकि वहाँ पर एक इकोसिस्टम बन गया है। Scouting agents will be better than what they are today. They will be more evolved. They will understand what sports management is all about. There will be a new way of educating people in sports management, new ways of creating career, new ways of creating jobs all over India, through states, through various different districts. And that is how you grow the economy, sports economy. So therefore, this whole platform addresses that. जो आपने अभी सुना होगा, आर्यमन जी ने जो बात करी थी, even inside, he spoke about coaches, he spoke about education, that how vital it is to do that, and there are a lot of other things, right? So this is what we're trying to address in IAMGAME as a sports platform. हम चाहते हैं हमारा देश जिसके लिए काबिल हैं, हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं by getting the right connection and accessibility. So I mean, I'll ask Aryaman to speak something. मंच खड़ा हुआ है IAMGAME का, वो काफ़ी मजबूत बन सकता है हमारे देश के लिए। आज हम जानते हैं कि इतने सारे खिलाड़ी हमारे देश में हैं, और उनको सफल बनाने के लिए अलग अलग मंच की ज़रूरत है। एक आपका कंपेटिटिव मंच जिसमें टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं, और वो आपका बीच वाला लेयर बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर और नीचे दो अलग फाउंडेशन बनने की ज़रूरत भी है। एक फाउंडेशन जिसके द्वारा लोगों को एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले स्पोर्ट्स के बारे में, कैसा खेला जाए, कैसा न्यूट्रिशन लिया जाए, कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए हमें, तो ये सब स्पोर्टिंग का टेक्निक कैसे होना चाहिए, मैदान पे कैसे हमें हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो इस तरह काफ़ी सारा जो एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद
जो है आपकी कंपेरेटिव लेयर आती है, उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटी वाली लेयर आती है, जिसके द्वारा या आप एक स्टार बनो या आपको कुछ जॉब सिक्योरिटी भी मिले कि आप अगर एक स्टार नहीं बन पाए तो आप क्या करोगे। तो उसके साथ अगर आप बिजनेस कम्युनिटी जोड़ पाए तो उससे हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सकता है जॉब सिक्योरिटी में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो IAM गेम का मंच जिन्होंने सर यहाँ पे सब ने खड़ा किया है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा वो फाउंडेशन लेयर बनाने में और उसके ऊपर कंपैरेटिव लेयर और जॉब सिक्योरिटी बनाने में जिसकी बहुत ज़रूरत है। और एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि अगर एक स्पोर्ट को एक कल्चर बनाना है तो उसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग पिलर्स होते हैं और एक पिलर होता है जो खिलाड़ी आपके साथ हो, दूसरा पिलर होता है जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आपके साथ खड़ा हो, तीसरा होता है सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन वो आपके साथ हो, और चौथा होता है जो जिस तरफ आप है जो मीडिया है, जो हमारे मीडिया के दोस्त और परिवार है वो आपके साथ हो। और जब ये चार फोर्स एक साथ हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसके द्वारा जो स्पोर्टिंग कल्चर है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। और इसका एक उदाहरण भी है जो हमने मध्य प्रदेश में खड़ा किया है, जो मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग हमने खड़ा किया है वो यही फैशन में किया है, जिससे ये चार जो पिलर्स हैं, पांच जो पिलर्स हैं उनको साथ लेके आए हैं हम। और उसी से आप देख सकते हैं कितने सारे खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी मिला है, एजुकेशन मिला है, जॉब सिक्योरिटी मिला है। तो इस तरीके के साथ अगर और भी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से IAM गेम बना है, मुझे लगता है कि भारत का भविष्य बहुत ही ऊंचाई तक ये लेके जाएंगे और मैं उनको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। सोने की चिड़िया जाना जाता था, और हमने आज़ादी के बाद अपनी एज अ कंट्री स्ट्रगल्स देखी एंड वी आर थैंकफुली नाउ आउट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स। अब वक्त आ गया कि देश का रोटी कपड़ा मकान तो सिक्योर हो गया, क्या कर दिया, सेट हो गया सब। अभी हमने इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स दुनिया को एक्सपोर्ट कर दिए। वी आर, इफ़ यू लुक एट टॉप 20 कॉर्पोरेट 70% आर रन बाय इंडियंस, तो वो फील्ड हो गया। अब वक्त आ गया हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स में शाइन करने का। ये अगले 10-12 साल हमारे से कोई नहीं ले सकता स्पोर्ट्स में। तो आई थिंक IAM गेम इज़ दैट प्लेटफॉर्म विच इज़ बिल्डिंग दैट मैक्सिकन वेव। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी आशीर्वाद चाहिए, और आप सबकी हमें और हमारे देश को ज़रूरत है मोटिवेशन की, वो एथलीट्स को इनकरेज करने की जो बहुत बड़े क्रिकेट के मैदान पे अभी नहीं पहुंचे हैं, पर दे आर विनिंग गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी भी है, वो खुद से स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। पहले ये नहीं देखा गया था। जब IPL शुरू हुआ था देश में, वो पहला कदम था स्पोर्टिंग को, कल्चर को एक ब्रांड में बनाने की, राइट। क्योंकि पहले क्रिकेट को आप देखेंगे तो क्रिकेट का भी इतना कुछ मकसद नहीं था। जब IPL आया सब तो परिवार देखने लगे कि भाई मेरा एक बेटा या बेटी इतनी कमा सकती है, या अगर वो एक लीग में बिकी जाए तो उसको इतने पैसे मिल सकते हैं, फिर उसको स्पॉन्सरशिप इतनी मिल सकती है। तो एक परिवार को भी कुछ अपने दिमाग में एक सुरक्षा मिलती है कि भैया अगर वो कोई भी मेरा बेटा या बेटी जाए स्पोर्ट्स में तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इसी तरह हम देश में भी अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अब वो शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं शुरुआत हो रही है हॉकी लीग की, कबड्डी की शुरू हो गई है, काफ़ी लोग कबड्डी ऑलरेडी देख रहे हैं टीवी पे, और इसके द्वारा आपको ये स्पोर्टिंग कल्चर जो है बनता हुआ दिखता जाएगा। और अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये एक जो मंच बना हुआ है वो कल्चर को ही बना रहे हैं। आप अलग अलग विभिन्न कम्युनिटीज़ को साथ लेके आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ड्राइव कर रहे हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट ड्राइव करते हैं किसी भी क्षेत्र में, आप बिजनेस में भी देखो, आप स्पोर्ट्स में भी देखो, तो खुद से वो पहिया जो है चलना शुरू कर देता है। अगर आप हमारे देश में भी देखें, पिछले 15 साल में जिस तरीके के साथ जो
बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आया है, जो हमारे खुद के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे देश में, उससे हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। आप जो है सीधे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए पिछले 15 साल।